Hello everyone, my name is Vineet. Today I am here to discuss a topic from climatology. The topic is wind movement with respect to the pressure belts. I'll be assuming here that you must be knowing about the air circulation, like tricellular model of air circulation, Hadley cell, Ferrel cell and polar cell. If not, in future videos we will try to incorporate that and make a small video regarding that also. However, this video mainly will be discussing how wind movement is taking place within the pressure belts. Before going to these pressure belts, so topic is wind movement with respect to pressure belts. Again, there is a shifting of pressure belts also, which is because of the apparent shifting of sun rays, where the wind movement is also observed in a very different way. That again we will discuss sometime different, but at present we will be focusing simply on the wind movement and pressure belts. Types of wind first. We have primary winds, secondary winds, tertiary winds. We will be here basically talking about these primary winds, and these primary winds are also called as permanent winds. There are three types of wind in this. One of the type of the wind here is trade winds, another is westerly winds, and third one is polar easterly winds. And we know that wind movement takes between high pressure to low pressure. Now how these pressure belts are created, that we will discuss sometime different. I will be assuming, again repeating the same, I will be assuming here you know at least basis of tricellular model of air circulation. Now if I talk about this earth, different latitudes, and if I denote them, let's say this to be equator, this to be Tropic of Cancer, here you have Tropic of Capricorn, here you have Arctic Circle, this one you have Antarctic Circle, and finally you have here in the top 90° North Pole, and here we have South Pole. These are some important parallel of latitudes. Now in this parallel of latitudes, how we discuss them? Low latitudes. Then we have another set here, mid latitudes. And finally we have here high latitudes. When we talk about the low latitudes, they are generally between equator to 30° north and south hemisphere. So all those latitudes which lie between this equator to 30° north and south, they are called as low latitudes. Similarly, we have another one, mid latitudes. These are those latitudes which lie between 30° to 60° north and south hemisphere. And then when you talk about high latitudes are anything which lies greater than 60° both north and southern hemisphere. So what are this part? If we talk about, this is the zone of high latitudes. What is this zone of? Low latitudes. This is again a zone of high latitudes. And here if I mark this one, it is the zone of mid latitudes. Am I clear with this? Which lie between the two extremes. Is this clear? Now, so it means we have pressure belts on this earth surface, and these pressure belts are created because of thermal and dynamic factors. Again, what are those factors, how they operate, we will discuss them sometime later in another video. Here we will be discussing about the pressure belts. Total are 7 pressure belts. There are 7 pressure belts across the earth at different latitudes. Now what I mean by them, these pressure belts are thermally created, that means either because of temperature or dynamically formed, that is because of
pressure difference, which is created because of rotation of Earth. Now, assume this is our Earth, and let me draw here different pressure belts now. Assume this is Earth, and here different pressure belts I have drawn. If you talk about few more things, let's say equatorial region, we say these areas are generally close to equator and roughly be taken as 0 to 10 degree north and south. You will find some specifications also between 0 to 5 degree north and south. But let's understand it here, and let me take it here as 0 to 10 degree north and south. After that equatorial area, there is a tropical area. This tropical area is within tropics, that is 23 degree and half north to south. And similarly, there is another part here which is called as subtropical region. Another part is subtropical region. What I mean by this subtropical region, it is slightly poleward of tropics. Now what I mean by this poleward of tropics, it is generally taken 25 degree to 30 degree north and south. However, its extension is also between 30 to 35 degree north and south. So tropics, and this is your subtropics. Similarly, there is another area which is called as polar area. Now what is this polar area? It is within few degrees of North Pole and South Pole. So first we should know, at least have these basic information, what basically equatorial region means, what basically tropical region means, what subtropical region means, and what polar area means. Let me now come back to this pressure belts. Let me rub this part. So if I consider this to be 0 to 10 degree northern hemisphere, 0 to 10 degree southern hemisphere, this zone is called as equatorial low pressure belt. What is this belt? Common to both the hemispheres. Is it clear? When I say 7 pressure belts, this one is common to both the hemisphere. Then around 25 to 30, or let's say 30 to 35, northern hemisphere. This zone is called as zone of subtropical high pressure belt. It will be common to both the hemispheres, called as subtropical, I am writing in short, high pressure belt. Similarly, as we move up further, here you have 60 to 65 degree northern hemisphere. This is 60 to 65 degree southern hemisphere. This is called as subpolar low pressure belt. Subpolar low pressure belt, and this will be here 90 degree North Pole, and we call it polar high pressure belt. This will be 90 degree South Pole, called as polar high pressure belt. Is it clear? Now how these belts are created, again we will try to make a separate video for it. These belts are outcome of thermodynamic effects, and here 3 cells of circulation takes place: Hadley cell, Ferrel cell, and polar cell. Is it clear? There are some traditional models and some recent views, but we need not to go right now in such detail. Let us first try to understand it in a basic terms. So these are 7 pressure belts, see, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Can I say equatorial one common to both the hemispheres? Now we know that wind movement takes place between high pressure to low pressure. Is it clear? Wind movement takes place between high pressure to low pressure. And we know factors controlling the wind movement. There are a lot of factors, like pressure gradient is there, Coriolis force is there, isn't it? Friction is there. There are a lot of other phenomena. Again, assuming you know those basic phenomena, which is vents,
factors controlling the wind movement. Let me tell you one more thing. This video will be mainly helpful to those people who at least know the factors controlling the wind movement and who know about the tricellular model of the air circulation. We know that wind move from high pressure to low pressure. So this wind should have moved between high pressure to low pressure. Here also this wind should have moved between high pressure to low pressure. See, subtropical high pressure to equatorial low pressure. Same in northern hemisphere, subtropical high pressure belt to equatorial low pressure. But we know in accordance to the Coriolis effect, there will be a deflection, which Ferrels has said in northern hemisphere it will be to the right of the direction of the origin of the wind, and in southern hemisphere this will be to the left of the origin of the wind. Is it clear? Now, from origin this is left, this is right. So here also in southern hemisphere this is left, this is right. So instead of going straight, this wind will slightly deflect. And one more, this Coriolis effect is 0 at equator and it keeps on increasing towards poles. So it means everywhere here wind movement should be like this. Similarly will happen in this part also. Is it clear? Now if we move to another part, there is another set of wind which moves from subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Again in both the hemispheres between the pressure gradient. But this is left, this is right. Here Coriolis force will also act. From here it is left, it is right. So instead of going straight, it will also deflect, but deflection will be slightly more here. Why? Because we are moving away from equator and going towards poles. It will also happen here. Got it? Similarly, there will be a wind movement which will be taking place between polar high pressure belt to subpolar low pressure belt in both the hemispheres. From origin this is left, this is right. So instead of going straight, this wind will also deflect to the right of its direction, but deflection will be maximum because we are close to the poles. Is it clear? Similarly, from the origin it is here left, it is here right. Hope it is clear. Now, you will remember three winds I told you. One is trade wind, another is westerlies, another is polar easterlies. You will remember the winds which blow from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt in both the hemispheres. It is called as the zone of trade winds. What is this called? Trade winds. This trade has to do nothing with the English word of business and commerce. It is derived from a German word trade, which means track to blow. So basically this area is the zone, or this area is dedicated to the winds which we called as trade winds. If you go with the directions, we always name the wind from the direction of origin. Ye north hai mera, this is south, this is west, and this is east. These are my four directions: north, south, west and east. Now, and we always name the wind from the direction of its origin. अगर कोई wind ऐसी आ रही है, origin ये रहा tail, arrow is head where it is going. ये head क्या दिखाता है? Wind जा कहाँ रही है. But we don't name it from there. We name it from origin. Similarly, these are the different winds in different direction. So as we name the winds from the origin point, can I call this one as northeast? What will be this called as? Southeast. कहाँ जा रही है उससे मतलब नहीं है, वो तो होगी किस डायरेक्शन में जा रही है. Origin कहाँ से हो रहा है वहाँ से नाम देते हैं. So can I call this one as southwest? And can I call this one as northwest? Clear? So this is the trade wind zone. In northern hemisphere, trade wind was coming from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt.
but following the Coriolis force, it get deflected to the right of its direction. So accordingly, if we see what is the origin point, if I say this is north, this is south, ये मेरा west, ये मेरा east, कहाँ से start हो रही है? North east. तो I will call this one as north east trade wind. क्या कहलाएगी ये? North east trade wind. ठीक है जी. वैसे ही अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, ये विंड चल रही थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे, लेकिन डिफ्लेक्ट होगी लेफ्ट को. सो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ओरिजिन क्या दिखा रहा है? साउथ ईस्ट. तो इसको नाम दे देंगे, वी विल कॉल्ड इट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. क्लियर? सिमिलरली आगे चलते हैं थोड़ा. All those winds which blow between subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt, not in one but in both the hemispheres, इनको हम कहते हैं westerly winds. What we call them? Westerly winds. मैं reason बता देता हूँ why westerlies. Deflection is so extreme that this wind appear to come from extreme west. देखो डायरेक्शन कहाँ से लग रही है? वेस्ट से आ रही है इसकी, तो नाम दे दिया वेस्टर्लीज. क्लियर है? अब यहां पे देखिए, वेस्टर्लीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वर ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट. अगेन कोरियोलिस फोर्स की वजह से कहां डिफ्लेक्ट हो गई? राइट को. लेट्स नेम इट. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. सो ओरिजिन कहां है? साउथ वेस्ट. So we call them south west westerlies. तो मैं क्या कह सकता हूँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट. सिमिलरली इन सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कहाँ से स्टार्ट हुई? नॉर्थ वेस्ट से. सो वी कॉल देम नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्लीज. Am I clear with this? वैसे ही अगर हम अब पोलार एरिया में जाए, इन पोलार एरियाज विंड वॉज मूविंग फ्रॉम पोलार हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, बट गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ऑफ इट्स डायरेक्शन. लेट्स सी द डायरेक्शन नाउ. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. व्हाट इज डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट. सो फर्स्ट you should remember this, all that winds which blow between the winds which blow between polar high pressure belt to subpolar low pressure belt, these winds are called as polar easterlies. Again, why easterlies? Deflection is so extreme that they appear to come from extreme east. It is common in southern hemisphere also. So what we call this one as, I am writing in short, polar easterlies. Is it clear? Now, in northern hemisphere, polar easterlies blow from polar high pressure belt से subpolar low pressure belt की तरफ. Deflection is towards right. So can I call them north east polar easterlies? Southern hemisphere में भी देखो, this is north, this is south, west, east. So origin is southeast. We call them south east पोलार ईस्टर्लीज. बन गई तीनों विंड्स, ट्रेड विंड भी, वेस्टर्लीज भी, पोलार ईस्टर्लीज भी. क्लियर यहां तक? अब ध्यान से देखिएगा. दीज ट्रेड विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज. क्या कहते हैं इनको? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज. देखो ये भी तो ईस्ट से ही आ रही है. व्हाट इज डायरेक्शन? ईस्ट. सो ट्रेड विंड्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज. सो वी हैव टू ईस्टर्लीज. एक ईस्टर्ली हमारी ट्रॉपिकल एरिया में चल रही है, एक ईस्टर्ली हमारी पोलार एरिया में चल रही है, फ्रॉम पोलार हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट. वी हैव वेस्टर्लीज. सो कैन आई से वेस्टर्लीज ब्लो इन बोथ द हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एज वेल एज southern hemisphere. So can I call westerlies also as mid latitude wind, high latitude, low latitude, and in between the two extremes there is mid latitude. Now you need to understand one more thing. Westerlies blow in both the hemisphere. Westerlies blow in both the hemispheres. What I mean by this?
westerlies blow in both northern as well as in southern hemisphere, but westerlies blow faster. इनकी स्पीड कहां पे ज्यादा होती है? southern hemisphere में. रीजन, क्योंकि southern hemisphere में friction is less. friction is less. क्यों है ऐसा? In comparison to northern hemisphere, due to absence of much land and dominance of water. If you see in southern hemisphere, in mid latitude zone, land बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो northern hemisphere में वेस्टर्ली चल रही है, southern में भी चल रही है, लेकिन जैसे ही northern hemisphere में चली, आगे माउंटेन्स है, वेजिटेटिव कवर है, दे गिव इट अ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है. लेकिन southern hemisphere में ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, यहाँ देखिए, लेट मी टेक दिस. इफ आई मेंशन दिस टू बी, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ऐसे मान के चलिए. दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. दिस इज सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट. दिस इज पोलार हाई प्रेशर बेल्ट. दिस इज सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट. And this is polar high pressure belt. Assume it is equatorial low pressure belt. This is subtropical high pressure belt, and this is subpolar low pressure belt, and this one is again your polar high pressure belt. Same will be in the southern hemisphere also. ठीक है. If I go here with the wind movement, I will explain all of them again here. यहाँ देखिए. Here wind should move from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. This is left, this is right. What is this wind called as? Trade wind. What are these winds called as? Trade winds. Which trade wind is this? Northeast trade winds. Similarly, in southern hemisphere, these trade winds should have moved from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. This is left, this is right. So it will deflect towards left. What are these winds? South east trade winds. ये कौन सी विंड आई आपकी यहाँ पे? मैं लिख रहा हूँ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. Similarly, if you go to another part, now which I was discussing with you, subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt, which wind moves? Westerlies. Which westerly is this? Direction देखो, north, south, west, east. So this will be called as southwest westerly wind. Similarly, in southern hemisphere, westerly should have moved like this, left, right. Subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Where will it deflect? Again, it will deflect towards the left. Now, what are these? North, west, westerly wind. See, north, south, west, east. Now, what I said, westerlies blow in this zone also, westerlies blow in this zone also. But the moment westerlies blow here, see this land is giving it lot of friction. Mountains bhi hai yahan pe like Rockies. Here also land is given friction. Here also land is given friction. So what is water bodies? Less and land is more there. तो ज़मीन बहुत ज़्यादा है, माउंटेन्स है वहाँ पे, वेजिटेशन है वहाँ पे, तो इसकी वजह से स्पीड क्या हो जाएगी? कम. एक फैक्टर अपार्ट फ्रॉम प्रेशर ग्रेडियंट के जो विंड स्पीड को कम कर सकता है वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स. सो अब आप ये बताइए, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में यहाँ तो लैंड ऑलमोस्ट एब्सेंट है, ऑलमोस्ट. सो व्हाट इज देयर डोमिनेंस ऑफ वाटर बॉडीज? सो इट ब्लोज वेरी फास्ट देयर. अब इसी के चलते हुए what sailors have done, sailors have given some dreadful terminologies to the westerlies which are blowing in southern hemisphere. At 40° southern hemisphere, sailors call them roaring 40s. Similarly, while they move across 50° southern hemisphere, sailors call them furious 50s. And while these winds move across 60° southern hemisphere, they are called as shrieking 60s. Is this clear? ये different dreadful
टर्मिनोलॉजीज क्यों दी गई है? ड्रेडफुल टर्मिनोलॉजीज, कुछ डरावने से नाम दे रखे हैं ऐसे क्यों? जैसे जैसे इनकी वेलोसिटी स्पीड बढ़ती जाती है वो काफ़ी सारी नॉइजेस क्रिएट करती हैं। एम आई क्लियर विद दिस? अब एक और चीज़ देखिए, वैसे ही अगर हम ऊपर जाएं, विंड शुड मूव फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये देखिए, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? नॉर्थ ईस्ट पोलर ईस्टर्लीज। यहां पे भी विंड शुड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वेयर इज इट डिफ्लेक्टिंग? टुवर्ड्स लेफ्ट। व्हाट वी कॉल्ड इट? साउथ ईस्ट पोलर ईस्टर्लीज। देखो ये एक मैंने बड़ा आइडियलिस्टिक कंडीशन में बताई है मूवमेंट, बट जैसे जैसे देयर इज एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सन रेज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, these pressure belts slightly migrate. We will discuss that in some other class. The topic will be shifting of pressure belts and the wind movement. So we'll discuss that separately. It was just an idealistic condition. Now remember one more thing here. Is this clear now? These dreadful terminologies? Okay. You will remember subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt zone is also called as horse latitudes. इसको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। देखो एक स्टोरी है इसके पीछे, वेदर इट इज अ मिथ और वेदर इट इज अ रियलिटी वी एग्जैक्टली डोंट नो, बट ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में इन एंशिएंट टाइम्स देयर वाज अ ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज एंड ट्रेड वाज एट द टाइम ऑफ द animals and the animals in demand were horses. अब ये मान के चलिए यहाँ यूरोप से अमेरिका की तरफ अगर कोई शिप आ रही है ना, if a ship is sailing from Europe to America and what is it containing? Horses. ये इनकी जर्नी है। It is believed that as this ship reaches to this subtropical high pressure belt zone, it got stagnant there for several days to weeks. रुक जाती थी, मूवमेंट बहुत कम। सेलर्स को लगता था द वेट ऑफ द हॉर्स वेसल्स हैव इंक्रीज्ड, बिकॉज इसमें क्या थे? सारे हॉर्सेस थे। द वेट ऑफ द हॉर्स वेसल्स हैव इंक्रीज्ड, इसी की वजह से शिप मूवमेंट नहीं हो रही। दे यूज्ड टू टेक द हॉर्सेस आउट, टाई देम विद रोप्स एंड थ्रो देम इनटू द सी। एनिमल्स थे, लॉट ऑफ हॉर्सेस टुगेदर थ्रोन इन द सी, दे यूज्ड टू स्विम अक्रॉस एंड शिप यूज्ड टू सेल। बट हाउ ट्रू इट इज वी डोंट नो. Whether it is truth, whether it is myth, or whether it is a reality, we don't know. But the question is why ships used to get stagnant here. Again, understand, I told you, you should have some basic understanding about tricellular model of air circulation. अगर आप यहाँ पे देखें जरा, ये जो एयर इक्वेटर से राइज की थी, I will show it for one hemisphere. It goes and descends around subtropical high pressure belt. Similarly, from 60 degree which rises, it goes and begin to descend here. So subtropical high pressure belt में हो क्या रहा है? Air is descending down. Don't get confused what this Hadley cell is, Ferrel cell is, or polar cell is. We'll discuss that sometime later. But those who already know about them, they'll be able to understand it very easily. और if you talk about this, यहाँ देखो, इक्वेटर पे बहुत सारी गर्मी है, टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो एयर राइजेज, इट डिफ्लेक्ट्स एंड बिगिन टू सिंक हियर। जैसे जैसे हवा राइज करेगी इट विल बिकम कोल्ड, है ना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ व्हाट विल हैपन? एयर विल डिफ्लेक्ट, दिस कोल्ड एयर विल डिफ्लेक्ट, become weak and begin to sink. Where it is sinking? If this is equator, it is sinking at 30 to 35 degree, 25 to 35 degrees sinking zone. तो जहाँ एयर सिंक कर रही है, it is exerting some pressure, तो बन गई हाई प्रेशर बेल्ट। जहां से एयर राइज कर रही है तो ये क्या बन गई हमारी? लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ इट वर्क्स। वी विल डिस्कस दैट सम टाइम लेटर। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। अज्यूम आप कहीं चल रहे हैं और मैं आपके ऊपर वेट इंक्रीज करता जाऊं, आपकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वैसे ही जो हवा इक्वेटर से राइज की थी वो कंटिन्यूसली यहां सिंक हो रही है। देयर इज अ डायनेमिक सब्सिडेंस ऑफ द एयर राइजिंग फ्रॉम हेडली सेल, और देयर इज अ डायनेमिक सब्सिडेंस ऑफ द एयर विच इज राइजिंग फ्रॉम
इक्वेटर। बस अभी के लिए इतना याद रखिए, समझ लिए ये इक्वेटर 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। जैसे जैसे ये हवा राइज की, इट बिकम्स कोल्ड एयर, cold air will begin to descend due to rotation of the earth. It will, instead of descending at equator, will begin to descend somewhere ahead of equator, 25 to 30 degree. समझ आ रहा है? Is it clear? So why ships used to get stagnant, even if it is true or a myth? It is because there was dynamic subsidence. Is it clear? अब एक और चीज याद रखिए, ये जो westerlies हैं, they are coming from subtropical area which is relatively warm. So what type of wind they carry? Warm air. And these polar easterlies, what are they coming from? Polar area, carrying cold wind along with them. Meeting of this warm and cold air, meeting of this warm and cold air around this zone give rise to fronts. इसको आगे पढ़ेंगे. And they give rise to cyclone called as temperate or extratropical साइक्लोन. इसको बाद में कभी कर लेंगे. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? नाउ विद इन दिस इक्वेटर देर इज अ जोन 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 5 डिग्री साउथ. ये इसी में एक जोन है. आई एम राइटिंग हियर 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ. दिस इज कॉल्ड एज डोल्ड्रम एरिया. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? डोल्ड्रम रीजन. होता क्या है इस डोल्ड्रम में? इट हैज वीक एंड फीबल विंड्स. बहुत ही वीक और बहुत कम हवाएं चलती हैं यहाँ. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ काम. जब शिफ्टिंग और प्रेशर बेल्ट पढ़ेंगे तब वहां पे थोड़ा और डिटेल पढ़ लेंगे इसके बारे में. इज इट क्लियर? अब ये तो आ गया एक पार्ट कि हाउ दिस विंड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्रेशर बेल्ट्स. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज प्रेशर बेल्ट्स, दीज विंड्स. दो टाइप की विंड्स मूवमेंट है यहाँ. एक कहलाती है ऑन शोर, एक कहलाती है ऑफ शोर. ऑन शोर क्या है? अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, assume this is my land and it is here facing your sea, or you can say water or ocean. If the wind is moving from sea to land, तो हम कहते हैं we are moving to the shore. So what we call these winds as onshore winds. और ये winds जो onshore आ रही हैं, can I say they carry moisture? So they will be accompanied with rainfall. बारिश देंगी बहुत सारा. क्यों? ये sea से आ रही है, अपने साथ moisture carry करके आ रही है. Similarly, when we say offshore winds, ये मैंने draw की offshore. What do you mean by offshore winds? Those winds which move from land to sea. So what will be these winds? Dry. So they will not give rainfall. So similarly, trade winds, westerlies and polar easterlies, they are onshore as well as offshore. You will remember one statement, trade winds. Very important. Two types of trade winds are there. Northeast trade winds, southeast trade winds. आप याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दे आर ऑनशोर टू ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड दे आर ऑफशोर टू वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इन ट्रॉपिकल एरियाज दीज विंड्स मूव. पहले तो सबसे पहले याद रखना इनका एरिया ऑफ मूवमेंट क्या है. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. जब वहां पे ये चल रही हैं तो कॉन्टिनेंट के ईस्ट में ये बारिश देंगी और वेस्ट में ये ऑफशोर हो जाएंगी. कैसे? मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको. सिमिलरली जब हम वेस्टर्लीज की बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप की वेस्टर्लीज हैं. एक हमारे पास है साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज विच ब्लोज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अनदर इज नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्लीज. यू विल अगेन रिमेंबर दीज वेस्टर्लीज, चाहे नॉर्थ वेस्ट हो या साउथ वेस्ट हो, दे विल बी ऑन शोर टू वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट and they will be offshore to eastern margin of continent. एक तो ये याद रख लीजिएगा. I will give you example with one continent. Rest later on you can practice yourself with the other part of the continents also. जैसे if we take an example of this Brazil, यहाँ पे मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ equator. This if I mark subtropical high pressure belt and this if I mark 60 degree
सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. Diagram might be here and there, just try to understand on the concept. This will be subtropical high pressure belt and this will be subpolar low pressure belt. ठीक है जी. चलिए पहली बात करते हैं, हमारी ट्रेड विंड्स कैसे मूव करती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. उससे पहले आप ये देखिए, अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं, इस कॉन्टिनेंट का ये मार्जिन क्या है, कैन आई राइट हियर ईस्ट, और ये वाला पूरा मार्जिन क्या है कॉन्टिनेंट का, वो वेस्ट. कैन आई से दिस विल फॉलो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके. और यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं, अगर आपको कुछ पता हो इनके बारे में. ये एंडीज है यहाँ पे, है ना. सो आई विल नॉट गो टू द ओरोग्राफिक इफेक्ट क्या है, कैसे होता है, वो किसी और टॉपिक पे पढ़े, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिए. सो ये हमारी ट्रेड विंड थी. कौन सी ट्रेड विंड थी ये, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. वेयर शुड इट डिफ्लेक्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसे जानी थी. तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड. क्लियर विद दिस. अब इस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ये पानी से चल रही है, सी से आ रही है. वेयर विल बी दिस ऑन शोर, ऑन दिस ईस्टर्न मार्जिन. सो यहाँ पे कितनी बारिश दे देगी ये, ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ बहुत सारी बारिश होगी. सो यू विल फाइंड हियर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टॉल ट्रीज विद डेंस कैनोपी. ऐसे बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे आपको यहाँ पे, आप इसको वेजिटेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, जिनकी बहुत सारी स्प्रेडेड डेंस कैनोपी होगी. जैसे जैसे ये विंड इंटीरियर पार्ट्स में आ रही है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट इज इंक्रीजिंग, तो मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा कम होता जा रहा है. टेम्परेचर यहाँ पे है, बट बारिश यहाँ पे कम हो रही है. कितनी हो रही है, 40 to 60 सेंटीमीटर. इसको कहेंगे हम सेमी एरिड एरिया. और यहीं पे आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बन जाएंगे. व्हाट यू कॉल देम, कैंपस. कैंपस आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका. और जैसे जैसे ये विंड्स आगे चली ओवर द कॉन्टिनेंट, दे आर लूजिंग द मॉइस्चर, मॉइस्चर खत्म हो रहा है, और यहीं पे माउंटेन से भी टकराएंगी और ड्राई हो जाएंगी. दे विल बी ऑफ शोर हियर. यहाँ पे क्या हुई थी, ऑन शोर. तो यहाँ पे आपका बन गया डेजर्ट, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. कौन सा ये, अटाकामा डेजर्ट. समझ आ रहा है हाउ दिस डेजर्ट इज क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ द ऑफ शोर इफेक्ट ऑफ ट्रेड विंड्स हियर. इज इट क्लियर. अब ये देखो, ये जो बीच वाला एरिया है ना, आप एनवायरमेंट में भी पढ़ते होंगे, ये बनता है इकोटोन. व्हाट इज इकोटोन, अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स. यहाँ पे क्या बना है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ये क्या है, डेजर्ट इकोसिस्टम. और ये क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम. सो इन दिस ग्रासलैंड इकोसिस्टम यू विल फाइंड स्पीशीज ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटीज. यहाँ पे you will find lion also, you can find buffalo also, you can find deer also. Is it clear? Okay. Similarly, अगर हम नीचे चले अब वेस्टर्लीज की तरफ, वेस्टर्लीज मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. ये लेफ्ट है, ये राइट है. वेयर विल इट डिफ्लेक्ट, लेफ्ट. सो वेयर इट इज ऑन शोर, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन. हेयर यू हैव दिस माउंटेन्स एंड दीज लाइक दिस. एज्यूम करो दिस इज द वाटर बॉडी. These winds will move, get an orographic effect, strike with this mountain, rise, make clouds and give here rainfall. And the moment these winds will descend from this side, what will it become? Hot and dry, है ना. Because जैसे ये cold wind अब descend हो रही है, it is getting compressed and adiabatically क्या हो रहा है, इसको heat up हो रही है. So क्या ये बारिश देगी, नहीं. ये क्या हो जाएगा, विंडवर्ड स्लोप. जहाँ बारिश है दिस विल बी लीवर्ड स्लोप. कभी आगे किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्पेसिफिकली कम टू दिस. तो यहाँ पे ये वेस्टर्लीज, यहाँ तो बारिश देंगी खूब सारी, और इस पार्ट में अगेन रेनफॉल विल बी लेस. तो ये आपका बन जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड विच इज कॉल्ड एज पंपास. पंपास आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका. और ये विंड्स चली गई यहाँ ऑफ शोर. Is it clear? So this not only works here, it works in the different part of the world. Even in this map,
If we take this example, equator, let's say this one. I will just give you one example. This is trade wind coming from subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. These are trade winds. See, where are they onshore? On eastern margin. Where are they offshore? On the western margin. Same happen in southern hemisphere also. So that we will discuss someday differently. Now the main aim of discussing this is you should have an idea how wind movement takes place with respect to the pressure belts. But again I am repeating, there is apparent shifting of pressure belt also because of the apparent shifting of sunlight. So these factors we can discuss in some other video. Thank you very much.